के वोसा राउंडअप में आपको बताएंगे न्यूजरसी के मकामी होटल में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से वुमेन टू वुमेन फोरम की चेयरपर्सन नुसरत सुहेल और उनकी टीम की जानिब से मुनक़्क़िद की गई एक तक़रीब का अहवाल। ख़वातीन में शऊर व आगही, हुकूक़ और तालीम के शोबों में काम करने वाली तंजीम वुमेन टू वुमेन के डिनर गाला में डिस्ट्रिक्ट 37 से असम्बली वुमेन शमा हैदर और डिस्ट्रिक्ट 16 से असम्बली वुमेन सदफ जाफ़र, डिस्ट्रिक्ट 18 से असम्बली मैन स्टर्ले स्टैनले, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली, पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से वाबस्ता डायरेक्टर महरीन जब्बार, पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी की हर शोबे से वाबस्ता ख़वातीन ने डिनर गाला में शिरकत की। गाला में कल्चर बाजार था, जहां ख़वातीन के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी के स्टॉल सजाए गए। तक़रीब के आखिर में सुरों की महफिल भी सजाई गई। तो आज का वोसा राउंडअप वुमेन टू वुमेन के डिनर गाला के नाम। निज़ामत के फ़राइज़ संभाले अम्मारा मुश्ताक ने डिनर गाला में शरीक मेहमानों को सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाई गई। इसके बाद तिलावत कलाम पाक की गई और अंग्रेज़ी ज़बान में इसका तर्जुमा भी पेश किया गया। And the earth he has put for the creatures. Therein are fruits, date palms producing fruit stalks and enclosing dates. And also corn with its leaves and stalks for food, and sweet scented plants. Then which of the blessing of your Lord will you both, jinns and men, deny? इब्तदाई लम्हात में हाज़रीन नशिस्तों से खड़े हुए और बाअदब होकर अमरीकी और पाकिस्तानी कौमी तराना भी पढ़ा गया। इसके बाद अम्मारा मुश्ताक ने वुमेन टू वुमेन की फाउंडर, चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स को स्टेज पर बुलाया। चेयरपर्सन नुसरत सुहेल ने अपनी गुफ्तगू में इस्तक़बालिया पेश किया और वुमेन टू वुमेन के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। Good evening everyone and Assalamu alaikum. I would like to welcome all respected guests, awardees, panelists, guest of honor and our Women to Women Forums team. To our Neighborhood Heroes Award ceremony, thank you once again to be here with us. My respect for each one of you. Thank you so much. Our executive team and Women to Women Forum's lifeline, Roundup, Ammara Mushtaq, Rahman, Sabina Mehdi, and Nikki. My words of appreciation is a small gesture of what you all do. May you be rewarded for all that you do. You aren't just planning networking events, and actually you're holding the torch of this collective societal change I've been talking about. We are going to achieve that change in the future together. Before I end, I want to give this message to everyone today. अंदाज़े बयान गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
नुसरत सुहेल ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली को दावत खिताब दी। आयशा अली का कहना था कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ख़ानदान को मजबूत करता है। It's really work in progress and a lot still remains to be done and to be achieved. As we celebrate this Women's Day, there's one thing that I have focused a great deal on, and that is the economic empowerment of women. We've also had recently a lot of women join the armed forces of the country, and now they are being promoted to higher ranks, which is again a great thing for the young women to see. And we have for the first time in Pakistan a female justice of the Supreme Court. So this is again a huge. We need to make conscious decisions that women are seen as leaders, as decision makers, and as role models for the entire community. They're doing an amazing job. Wherever I go, I see Pakistani American women taking the lead and excelling in the professions that they have chosen. आयशा अली को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 16 से असेंबली वुमेन सदफ जाफर को ख्यालात के इजहार के लिए मदऊ किया गया। उनका कहना था कि बेहतर माशरे की तश्कील बाशऊर औरत के बगैर मुमकिन नहीं। We need to be the champions of our own communities and our own networks, which is why I'm proud to push for initiatives in the legislature that will directly benefit women and South Asian American women in particular. Two of my priorities are mental health, particularly for students, and maternal and reproductive health. I'm sure many of you have experienced the stigma and silence around discussing issues of mental health and reproductive issues, which is detrimental to women's health. It is part of my mission to make positive change through legislation and community outreach. Thank you for giving me the opportunity to be here today, and I look forward to this evening's celebration, amplifying the voices of Pakistani and South Asian American women in our state. Thank you. गुफ्तगू के साथ ही असेंबली वुमेन सदफ जाफर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और इजहार ख्याल के लिए डिस्ट्रिक्ट 18 से असेंबलीमैन स्टर्ले स्टैनले को स्टेज पर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, उन्हें बराबरी की सतह पर इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा जाना चाहिए। So tonight I want to talk to both the older and the younger generation. So if you can just give me a few minutes of your time and just listen to what I have to say. When I first became a legislator, I knew it was very important to create a work environment where diverse voices and experiences were uplifted, including in the legislative process. When I got elected to the assembly, I was only the third South Asian assemblyman to be elected. I was one of 3 men to be elected. I was from the South Asian descent. But this year, in the last previous election, we had a great breaking of that ceiling. We doubled our number in the legislature from 3 to 6. But the 3 that came on board were women. Assemblywoman Saraf Jaffer, Assemblywoman Shama Hader, and Assemblywoman Ellen Park. The 3 of them came on board to double our number. And it is the man's responsibility to stand up against discrimination, gender equality, and we must work meaningfully towards creating an environment where women feel supported, confident, and heard. Thank you. न्यूजर्सी के मकामी होटल में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से वुमेन टू वुमेन के डिनर गाला में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए थे, जहां दीदा से मलबूसात और नित नए डिज़ाइन के ज़ेवरात ने ख़वातीन को अपनी जानिब राग़िब किया। वोसा राउंडअप में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान। वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आज के वोसा राउंडअप में आपको अहवाल बता रहे हैं न्यूजर्सी के मकामी होटल में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से वुमेन टू वुमेन फोरम की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब का। गाला में बच्चों की परफॉर्मेंस ने भी शुरका के दिल जीत लिए। सुहेल राना की फिल्मी कंपोजिशन हो या दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमा, फरजाना हक़ी और बच्चों ने ट्रिब्यूट पेश करने का हक अदा कर दिया। उर्दू अकेडमी की खिदमात क्या हैं? सबीना महमूद ने इस पर सेर हासिल गुफ्तगू की, जबकि अम्मारा मुश्ताक ने तफसीलात से आगाह किया। What is Women to Women Forum? तो मैं बोलूँगी कि this is our biggest product from Women to Women Forum, that we are teaching our next generation of children, and not just songs. We teach them Urdu, we teach them चार्ट बनाना सिखाते हैं and all the little lovely things about Pakistan. और जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, recently there was a small attack in Pakistan, and I want to take a moment of silence for all those victims there and across the globe for all the catastrophes that are happening out there. So please, a moment of silence. This gala is an example of that. We have invited so many guests around the community. We've involved youth, we've involved different small businesses and local businesses so that you have an opportunity to network with each other and build connections. Our second objective is to build a cohesive community with alliances in philanthropy, business, politics, and healthcare. And that's why we like to keep a diverse network of individuals so that you can connect to mentors or even mentees that are in particular to your industry or field of study. And then third, the most important thing, and I hope that you've been seeing how we've had youth come up here. We've had youth of all ages. We have college students, we have high schoolers, and then we have young children in the middle school, elementary school. We also have mature adults, we have young parents here as well. Our objective is to close the generational gap. इसके बाद मेंबर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि किसी भी काम में निखार तब तक नहीं आ सकता जब तक लोग मिलकर एक टीम की सूरत में मेहनत ना करें। This is the most thrilling, which I am not there yet, but I'm glad my daughter got to do it, and all these wonderful ladies here, especially Nusrat, Amara, and I think Danish, and so many people got to do this. They might have trouble understanding their mother tongue. That's why we decided to introduce Urdu Academy to give our children more exposure to connect with their roots, language, culture, and heritage. And making sure that this program will be better next time, because we are doing panels, we are bringing the awareness in the community for people to let them know that there is somebody who can help you. वुमेन टू वुमेन के गाला में हर सू रंग ही रंग थे और ऐसे में मुकर्रिरीन के अल्फाज भी किसी धनक से कम नहीं थे।
When the burning comes, she will turn her head and earn the respect of those most important to her. Her breath warms my cheeks. People like us make our own place. Can carve it, break all ceilings, shatter all glass until there's nothing left to be shattered. Break the bias. Thank you. अब बारी आई अवार्ड्स देने की। डिनर गाला में बाज़ा रूही, कुलसूम मंजूर काज़मी, डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर मिनाल, महरीन जब्बार, शमा हैदर और दीगर को उनकी कम्युनिटी के लिए खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड और फूलों के गुलदस्ते से नवाजा गया। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में सुरों की महफिल सजी और ऐसे सुर बिखरे कि गुलूकार और साजिंदों ने समा बांध दिया। वुमेन टू वुमेन के डिनर गाला में डिनर पेश किया गया और ग्रुप फोटो भी बनवाए गए। ख़वातीन की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए वुमेन टू वुमेन फोरम की चेयरपर्सन नुसरत सुहेल का सफ़र कामयाबी से जारी है। आइए आप भी वुमेन टू वुमेन का साथ दीजिए।